साबधान लोगोफोर साबधान ना बिराद स्ट्रं बानायबाय सरकारा ना माखौ बानायदों लोगोफोर मिथिबायना बे इ-रिक्सानि बेटारि एपखौ सोरबा सोरबा माबा खालामनानै ट्राइ खालामनायो एबा जायोना जायाना ट्राइ खालामनायोना नैबे बुस्थुखौ सरकारा ओरैबायदि आखायाव लाबाय लोगोफोर जायनो बेबायदि भुलावबो बेबायदि दा खालामखासै लोगोफोर इ-रिक्सानि माबा बे बेटारि नाम्बारखौ लानानै ब्लुटुथजों अफ खालामोना मा खालामोनो दा बुहुद फिरफिलि इ-रिक्सायानो बेबायदि लक जानानै दं नालाय दा जानायखायसो जानाय साइडआव थांनानै जुदि लामा गेजेरावनो जुदि लक जायोबा बेसेबां गिख्रंथाव एक्सिडेन्ट जागोन उननि गारिया ब्रेक गास्लाबनो हानाय नङाना लोगोफोर दा बिनि थाखायनो सरकारा गोख्रों राहा लाबाय लोगोफोर भुलावबो ट्राइ खालामनायनो होननानै दा खालामखा लोगोफोर साबधान सांग्रां जा जुदि बेफोरबायदि खालामनायखौ मोनफ्लांबायनांगौबा 3 बोसोर माबा कारादन्ड ना मा होनो जेल जानांगौनो ओमफ्राय आरो 5 लाख जुरिमानानो लोगोफोर नंखाय मोनसे एपआव थुनानै जुदि फिरफिलिखौ थाथ'होनांगौबानो नायलां लोगोफोर मा होनलांदों असमिया निउसाव दामगासिनो बेखौ आं बेखौ आपडेट होदों लोगोफोर आपडेट होगोन बेजों खोनासं लोगोफोर बयबो मिन्थिथों शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि माबायाव अलखदाव जाहाथे दाफासिथों मानो होनोबा मोनसे एपखौ लानानै सोरनिबा फिरफिलिखौ थाथ'होनायनो होननानै खेला खालामनोबो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि खेला खालामफुनाय समाव जुदि सरकारा मोनफ्लाङोबा 5 लाख थाखा जुरिमाना 3 बोसोर जेलनो लोगोफोर बेखायनो मालाबाबो बेफोरबायदि आखलखौ दाला दामाव दासान ट्राइबो दाखालाम आरो सोरबा लोगोखौबो बेफोरबायदि खस्थ'बो दाहो माबायदि खारा खालामदों सरकारा खोनासंलां लोगोफोर नायलां होलांगासिनो आङो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर जाहाथे बयबो नुथों मिन्थिथों जाहाथे बयबो अलखदाव दा गोग्लैथों नंखाय दसेनि थाखायनो 5 लाख थाखा जुरिमाना रावबो दाहोनांथों लोगोफोर खोनासंलांदो नायलांदो ফোন এটা বেটাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰিলেই এপ ব্যৱহাৰ কৰি বেটাৰীৰ আউটপুট বন্ধ কৰিব পাৰি যিয়ে ই-ৰিক্সাৰ মটৰ বন্ধ কৰি ৰাস্তাৰ মাজত বন্ধ কৰি দিয়ে এই এপটোৱে প্ৰতিখন ই-ৰিক্সাত কাম নকৰে ই কেৱল বেটাৰীসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰে যিবোৰৰ এটা সুসংগত ব্লুটুথ ব্যৱস্থা আছে আৰু সংযোগ বিকল্প অন কৰা হৈছে লিড এচিড বেটাৰীৰ সৈতে ই কাম নকৰে গতিকে লিড এচিড বেটাৰীযুক্ত ই-ৰিক্সা ব্যৱহাৰ ষ্টাৰ্ট বা বন্ধ কৰিব নোৱাৰি গতিকে এতিয়া এছামৰ প্ৰেংক বা ফুটেৰ বাবে বিপদত পৰিব লগা হৈছে লাখ লাখ ই-ৰিক্সা চালক असल में ये जो है कली का है और हालांकि ऐसा था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ मैं अपनी वीडियो बना के घर जा रहा था तो रास्ते में जब मैंने देखा तो एक अंकल थे वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है जिससे लोग शरारती कर रहे हैं ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा खराब हो गई है कि बारिश का भी समय है तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेके आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए और एक हाथ से उनका कनेक्ट कर रहा था जैसे वो कनेक्ट होती है तो एकदम मैंने अंकल को आवाज मार के रोक दिया मैंने कहा अंकल रुक जाओ तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने जब उनके पास गया तो वो तो रोने लगे एकदम मैंने कहा क्या हुआ अंकल बोले यार सुबह से मेरी रोजी रोटी खराब हो गई है और 400 से 500 रुपये वो रिक्शा रेंट पे लेते हैं यानी उनका जो रिक्शा है वो भी रेंट पे है उनकी अपनी नहीं है तो वो एकदम रोने लगे भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे हालांकि मुझे भी देख के आंसू आने लगे तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही तो ऐसे जो लोग लड़के कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है क्योंकि देखो रिक्शे वाले क्या होता है उनकी बहुत से लोगों की रिक्शा अपनी नहीं होती वो रेंट पे लेके चलाते हैं 400-500 रुपये में ইয়াৰ ফলত পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুতেই এই এপ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে যাৰ বাবে বেট BMS এপৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আন্তৰ্জাতিক চাইবাৰ নিৰাপত্তা আইন আয়োগৰ অধ্যক্ষ পৱন দুগলে কয় যে এয়া কোনো খেল নহয় বৰঞ্চ ধাৰা ৬৬ৰ অধীনত থকা এক আইনগত অপৰাধ ইয়াৰ বাবে ৩ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ৫ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব We have to realize that today an e-rickshaw is not just an e-rickshaw, it's a computer system. And therefore, if it's operating in the digital format, it's got some memory functions, it's always possible that that e-rickshaw can be potentially hacked. The systems can be hacked
buy legitimate apps but which are misused in a wrong direction. And that's what this new misuse of this Chinese app is being reported, where youngsters and other people are easily going ahead and hacking into the computer system of the e-rickshaw, making it stop its functions and going ahead and incapacitating the performance of the said rickshaw. In the eyes of law, I am very clear, this is not a game. This is an offence under Section 66, read with Section 43 of the Information Technology Act 2000, because this is an activity that's done dishonestly or fraudulently, where people enter into the computer system of this e-rickshaw without the consent or the knowledge of the person who's the owner or the person in charge of the said e-rickshaw. And that becomes the offence of a computer-related offence under Section 66 of the IT Act, punishable with 3 years imprisonment and 5 lakh rupees fine. Somehow, perception of people needs to change. People feel, oh, it's an e-rickshaw. That's not a computer, so I can play with the e-rickshaw. What you're not realizing is that e-rickshaw, in the eyes of law, still constitutes a computer system and computer resource. And if you are going to unauthorizedly gain entry into the computer system, you are not just going ahead and violating the criminal law of the country, you're liable to be criminally prosecuted under the Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nyaya Sanhita. In addition, you can also potentially be facing liability to pay civil damages by way of compensation under Section 43 of the Information Technology Act. So I think this should not be seen as a mere game, a mere source of entertainment. It's a serious exercise because you're hacking via Bluetooth or otherwise of the e-rickshaw computer system and network, constitutes an act which prejudicially impacts and diminishes the value and utility of information that's residing in the said e-rickshaw and effectively stops e-rickshaws in large number of cases. So I think people need to be made more aware of these ramifications, and government needs to immediately come up with some matters where these kind of cases need to be booked under the IT Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita. And a message needs to be given that the time for games, playing games on e-rickshaw is over. You try to mess up with an e-rickshaw by tampering with its computer system or resource, be prepared to go to jail because you're going to be prosecuted for computer-related offences under the Indian Cyber Law.